Recording in progress. Hello, I'm audible. Minahil, you are audible. Okay, so we'll start. Assalamu alaikum, everyone. I'm Minahil Bint Tariq, local officer of Research Exchange at Rashid Latif Medical College. Welcome you all into this today's session, which is Unveiling the Unknown, a research symposium. We'll start our day off with the ice-breaking session. For that, I would like to call Abir. Abir, please take over. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, you are. Okay, so first of all, I would like to welcome you all in today's session. This is basically a getting to know you segment. You guys can either use the mic or the chat box to introduce yourselves and tell us your most eye-opening experience. So
Mariam Tariq, can you go first? Amna, I'm making you the host. Please solve the issue of Mariam. She's saying to unmute her. Okay. Abir, continue, please. Maybe Abdullah Abid can go first. Guys, please respond. We have to start with the session as well. All right, Abdullah, nominate someone else. Hassan, are you there? इंटरेस्टिंग फैक्ट बतानी है क्या बताना है मुझे जरा प्लीज Eye-opening experience. हाँ आई ओपनिंग एक्सपीरियंस वेल probably दो आउटस्विंगर्स और वन इनस्विंगर टू रोहित शर्मा वो रात को लेके आइज ओपन हो गई थी उससे
Abir, please ask someone else. Yeah, Fatma Batul, can you go now? Guys, come on, respond. Asha, I think so. No one is interested in the icebreaking session today. So we'll go with the quiz part. कल जो आप लोगों ने session लिया था, we have a short quiz planned for you guys. Yeah, So bhai, Maham will ask you guys some questions and please respond. You can use the chat box definitely because you're not using the mic. So please do respond. Maham, please take over. Okay, Assalamu alaikum everyone. So my name is Maham. I'm a second year student at Shalimar. So today, yesterday we had a small research session, and I think a lot of you guys attended it. So today we're going to have a small quiz session to just test your knowledge in yesterday's research session. So I'll ask you questions, and you can either unmute yourselves and answer, or you guys can just type in the chat box. They're very basic questions, so it's just to basically assess your knowledge before today's session. So I'll start with the first question. If you guys know the answer, please unmute yourselves or just type in the chat box. So the first question is, what is the basic purpose of research and why do we conduct research? All right, I'll answer that. Research is studying something that has already been studied, like researching something that has already been searched up. And we do research for like diagnosis purposes as well. To basically यही होता है कि किसी disease की diagnosis वगैरह के लिए mostly we do research, a part of interest as well. Exactly. And we also got some answers. So Mariam is saying broadening of horizon. That's correct. Alicia is saying to analyze data or to recreate findings. That is also correct. Abdullah also said to get a more filtered and evolved form of knowledge. So that is also correct. And Shaban was also said to strengthen our CV and to enhance for match, besides it for clinical knowledge. Okay, so that is all correct. So let's move on to the next question. Why should our research be accurate and precise? Okay, so I'll repeat the question. Why should our research be accurate and precise? Okay, we have a few answers. So Shadman is saying to improve healthcare facilities. That is true. Mariam is saying since professionals don't have whole day to read it. That is correct. Minahil has said to catch readers' attention and it looks more professional. Yes. Dalal has also said that no one has time to read it. Shabanu says the prevention and rejection of chances. Alicia says to minimize biases. That is correct. And to make it less boring and more targeted towards the goal. So all of these are correct. So let's just move on to the next question. So how do we get young adults to participate more in research? Okay, so Mariam says you have awareness webinars like these, so that is correct. Also to have workshops like this workshop. Hassan has said to make it more accessible at undergrad level, that is correct. Social media posts, Abir has said, Zainab carrying out seminars like these to generate interest. Alicia says by doing field investigation.
Abdullah had said by small activities, by signing some topics. That is true. And Mariam has said that telling them that it ain't hard. That's correct. Ali said by making them more aware of the benefits of research on the resume. That's true. Shabanu said by organizing more webinars related to it weekly or daily. True. Fatma has said create space for exploration. I agree with that. And Talal has said that incorporate these into daily lectures. So that is true. So now let's just move on to the next question. How do we get our research published? I guess they'll be able to answer that after today's session, I think so. Yes, that's true. So, yes, I'll repeat the question. How do we get our research published? Well, that is a vague question. That's true. So I guess we will answer this question in today's session. Mariam has said to look for journal, read its guidelines, make manuscript. True. Aisha has said by bibliographic databases. So that is also true. We will figure out what that all is today. So let's move on to the next question. What do you think is the importance of ethical approval in research paper? Why do we need an ethical approval of our research paper? Is this a question or like are you just assessing our knowledge? So it's just to assess your knowledge, like how much research, before today's session. Okay, yeah. So I kind of think that you need a review of the research because obviously if you write about a topic, if I write about diabetes and I try to like publish that, right? And what if there's a lot of mistakes in what I've written? So in that sense, or maybe I've quoted that I've done this research over on 150 people, but actually it's not been done on 150 people, it's been done on 5 people. So I think wherever I need to get it published, they should check it and see if I'm lying or if I've written something wrong, or also if I've actually followed the guidelines of the research, if it's actually a cross-sectional study, or if I've, written it right. So I think that's why you need an ethical review. That's a really good answer. So Isha has given us a really good answer. We've also got some other answers here. So Mariam says to respect human dignity for human rights. Alicia says that is true for standards of right and wrong completely. Zen, okay, so Zen is asking to add people in waiting room. Okay, so Aisha also says this gives consent. So that is absolutely correct. Now let's move on to the next question. What are research objectives? Why do we have research? I guess they just help summarize the whole concept of the research that we're carrying out and also, help the person who's reading it understand it really well. And yeah. And also maybe it's that if, for example, there's a new drug in the market, and if you Okay, so Isha, you can continue. Yeah, I was saying that maybe if there's a new drug in the market and you want to like check its validity, or maybe you want to check its complications, that maybe it's a beta blocker and you want to check Yeah. if it causes diabetes or something in the long term, or maybe even its short term side effects. So you could Yeah. conduct research on a group of people. Or the same thing that you could check is you could do a comparison between two sort of things that, maybe people living, Yeah. maybe people of depression going to college, and then when normal people going to college, what is their how are they coping with their studies, something like that, a comparison. So it sort of gives a good idea of what these diseases or these Exactly. complications do to yourself. Exactly. So we got really good answers from Isha and Zainab. We also have answers. Mariam says aim of research are its objectives.
and depends on topic of research. Exactly, it's very specific to the topic. Alicia says without it, you may end with unmanageable results. True. Talal says for advancement in medical field. That is true. Fatma says to describe what you intend to accomplish in your research. Correct. And Abdullah says to find better understanding of a disease, drug effects, or compare different clinical conditions. Okay, so now let's move on to our last question. How how do we create a good research hypothesis? Okay, so how do we create a good research hypothesis? For those of you who haven't done research hypothesis yet, today we will cover it in our session. But Mariam says by good literature research, and Amna also says by good literature search. Shabana says by reading more and more articles, and Alicia says by doing preliminary research. Okay, so all of these answers are correct. So that's it for our quiz session. We just wanted to test your knowledge beforehand. So we got a really good response from you guys. Now I'll hand the session back to Minahil, and we will officially start our session. All right, thank you so much, Maham. It was so great seeing you all answer the questions. You all are very knowledgeable. And Amna, please make ma'am the host. In the meanwhile, I'll introduce our worthy speaker, Dr. Sadia Yaseen. She's the Director of Medical Education Department and Co-Director of Research Cell at Rashid Latif Medical College. And she's also the co-editor of a journal of Rashid Latif Medical College. So ma'am, over to you. Thank you so much. Good evening and very warm welcome to all of you. And I'm really humbled to Medical Student Association Pakistan and Minahil. They extended this opportunity to me to be with you young peoples and organize this seminar. I'm really happy for this. And before delving into the session, I would like to say a few words about yesterday. About yesterday's speaker, I would like to compliment his wonderful participant engagement skills. Dr. Yaseen is really a gem of RLMC. He's really a mentor to his juniors. We can find thousands of coaches in our life, but to find a real mentor is very difficult task. So please don't lose him. And I would definitely suggest you that he's really a gem. And about yesterday's participants, you just blasted my imagination that how you think and how you create the things and your creativity, your active involvement, your ideas, they really surprised me. Before delving into our session properly or formally, I would like to share some non-academic things with you people. हम पढ़ाई की बड़ी बातें करते हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं हम. I want you people to be holistic human being as well. तो एक छोटी सी सजेशन देना चाहूंगी. Am I audible to you people? आप रिएक्ट कर सकते हैं, क्या आपको सुन रहा है? Yes, ma'am, you are. ओके ओके, थैंक यू. इब्ने बतूता का नाम आप में से किसी ने सुना हुआ है? डियर स्टूडेंट्स, कैन यू रिस्पॉन्ड? से यस इन चैट बॉक्स. Yes, ma'am. He's a long traveler, long time ago, around about in 13th century. So he was very fond of Maulana Rumi. Maybe you have heard about him, who lived in Kunya and died in Kunya. He was a great Islamic scholar and a poet. तो एक दिन ऐसा हुआ कि इब्ने बतूता जो कि एक मोरक्कन सिटीजन थे, वो 1360s या 70s की बात है कि वो अपने शहर से निकले और कुनिया में पहुंचे. कुनिया में वो एक कारवां सराय में ठहरे हुए थे, तो उनका एक दोस्त वहां पे उन्हें मिला. ही वॉज अ ग्रीक, उसका नाम कॉर्टिस था. तो कॉर्टिस वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ रूमी. जब उनकी आपस में फ्रेंडशिप इतनी होगी कि वन डे व्हेन ही लेफ्ट फ्रॉम द कारवांसराय, तो कॉर्टिस जो था उसने कहा कि मैं आपको बड़ा मिस करूंगा, इब्ने बतूता को, एंड आई विल मीट यू सून एट द सेम प्लेस. तो इब्ने बतूता ने कहा कि मैं तो यहाँ से जाने लगा हूँ,
तो ही वॉज वेरी सैड टू हियर दिस, लेकिन फिर उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपने बैग से कुछ चीज निकाली उसने। इब्ने बतूता बड़ा हैरान हुए देख के कि वो एक मिरर था। तो उन्होंने उससे कोर्टिस को कहा कि मिरर मुझे आप क्यों देना चाह रहे हैं? तो मैं तो ये अपना चेहरा जो है किसी बार्बर शॉप पे, किसी वेंडर शॉप पे देख सकता हूँ, तो मिरर देने का आपका मकसद मुझे क्या है? तो वो कहने लगे कि यू विल बी ट्रेवलिंग थ्रू दीज लैंड्स इन रेन एंड शेडोज एंड सनलाइट, एंड दीज ऑल थिंग्स विल ब्यूटिफाई यू, योर मेमोरीज, यू दे विल ब्यूटिफाई योर मेमोरीज। तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ के हर एक लम्हे पे आप अपने चेहरे के वो एक्सप्रेशन देख सकें, वो खुशी अपनी देख सकें जो आपने अचीव की है इन सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो आप सबसे भी एक चीज कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो आप लोग करते हैं उनको जरूर लिखा करें और रिफ्लेक्ट बैक किया करें आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर। जब आप उन चीजों को रीड आउट करेंगे तो यू विल सर्टेनली फील हैप्पी एंड यू विल फील मोटिवेटेड। तो अब हम अपने सेशन की तरफ फॉर्मली बढ़ते हैं। 10 मिनट्स का अलार्म मुझे दे दिया है उसने, जूम ने। After 10 minutes, we will be generating a new link and we will be interacting again with you people. तो आई होप आपको आप बोर नहीं हुए होंगे मेरी छोटी सी डिस्कशन से। आप चैट बॉक्स जो है एक्टिवली मैं इसको चेक करती रहूंगी, तो आपने इसमें अपनी जो पार्टिसिपेशन है उससे मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हमारा जो एंड टॉपिक मैम, है, सेकेंडली अगर कोई वेटिंग रूम है तो प्लीज ऐड देम इन द मीटिंग। थैंक यू। yes, there are 3 people in waiting room. Admit all. यस मैम, Okay, एडमिट कर दे। admit all. I यस, tried to admit all. They are they admitted? नॉट येट। I think दे they आर। are. यस मैम, थैंक यू। Yes, okay. Thank you. Please keep me reminding, मैं भूल जाती हूँ। तो हम बात कर रहे थे इस सेशन की। तो टुडेज सेशन इज अबाउट आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग अ कंपेलिंग आर्टिकल। तो इसके 2 मॉडल्स हैं। एक तो ये कि मैं आपको 2 एक्टिविटीज दरमियान में करवाऊँ मिड टाइम, एक एक्टिविटी हो एक एट द एंड ऑफ द सेशन हो, जिसमें आप ग्रुप्स की फॉर्म में आर्टिकल को एनालाइज करें जो आर्टिकल मैं आपको दूं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द चैट जीपीटी, मैं आपको चैट जीपीटी पे साथ साथ आपको जो है वो बताती जाऊं कि आप आर्टिकल अगर लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे स्ट्रोक गाइडलाइंस की गाइडेंस में। ठीक है? तो मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं कि विच मॉडल डू यू लाइक टू वर्क इन ग्रुप्स, और डू यू लाइक टू have ongoing hands-on activity and crafting your own topic of choice. The second option. Second option. There is one issue that we can't make a breakout room in the free version of Zoom. So आपको खुद ही ग्रुप बनाने पड़ेंगे, बट वी विल स्टे इन द मेन रूम। तो आप अपने ग्रुप्स आप खुद ही कैसे डिसाइड करेंगे, इस चीज को हम पहले सॉर्ट आउट कर लें, फिर हम चलेंगे अपने सेशन की तरफ। ओके, ये अच्छा आइडिया है अल्फाबेटिकली। सो आई थिंक मिनाहिल मिनाहिल विल डू इट। मिनाहिल, आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए इसमें ग्रुप बनाने में। तो हम एक मिड टाइम एक्टिविटी करेंगे, एक एट द एंड ऑफ सेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन एंड can you see my screen? Can you people see my screen? इट्स विजिबल। It's visible. Okay, thank you so much. Um, मैं साथ में चैट बॉक्स भी चेक कर रही हूँ एक्चुअली। आई एम नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन यूजिंग Zoom. So this is the first slide is visible or something else? It's the first slide, ma'am. Okay, so today's topic is how to write an article. Do you people know about the types of research? Yesterday, I think Essen has told you already about the research types. If no, or yes, just tell me in the chat box. All-time league Europe. Yes, you know that. That's great. That's great. So let's delve into the learning objective of today's workshop.
रोनाल्डो के 496 मैच किसमें यूरोपियन लीग्स में Minahil, can you control this background noise? Kindly please turn off your mic. रोनाल्डो ने Fahad, मैचेस खेले 651, मेसी ने खेले 578। फर्क Fahad, चेक please turn off your mic. 73 मैचेस का फर्क है। और खेल नहीं सकता ना, He's not I'm listening. sorry. Okay. So first, our learning objective is types of research article. We will be discussing the types of research article. कल आपने types of research पढ़ ली हैं, तो research तब तक research नहीं होती जब तक आप उसे publicly display नहीं करते। आपने जो भी achieve किया अपने experiment से, अपनी study से, जब तक आप public के साथ share नहीं करेंगे, how come it into the domain of public interest, तो उसे publish करना बड़ा जरूरी है। तो आप किस तरह publish करेंगे? On the basis of type of research article. The second learning objective, I think it is stuck. The second is familiarize with STROP guideline. तो आप उन आर्टिकल को लिखेंगे कैसे? There must be some systematic guidelines for writing these article. तो हम सबसे पहले उनसे familiarize होंगे। उन आर्टिकल को लिखने के लिए हमें जो guidelines provide की गई हैं, they are STROP guidelines. Okay. Do you people get it? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? काइंडली प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताते जाएं साथ साथ। यू गेट इट? No, ma'am. नो और यस? ओके। She's saying there's no problem. Ma'am, I'm saying there's no problem. You're clear Okay, and we're okay. The understanding. next objective is identify and discuss the components of STROP checklist. तो हम देखेंगे कि इन STROP checklist में एक्चुअली है क्या, हमें क्या गाइड कर रही है, किस तरह हमने आर्टिकल लिखना है। The last objective is analyze a STROP compliant research article. तो ये हमारी एक एक्टिविटी होगी। आपको एक आर्टिकल मैं शेयर करूंगी। you people will be working in groups, और उन ग्रुप्स में हम आपको असाइन करेंगे कुछ पार्ट्स हर आर्टिकल के, कि हर ग्रुप एक पार्ट उस आर्टिकल का जो है उस पर वर्कअप करेगा। एंड देन इफ यू हैव अ फैसिलिटी ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, इट विल बी गुड एंड यू विल बी डिस्प्लेइंग योर प्रेजेंटेशन। वी विल मेक यू होस्ट एंड यू विल डिस्प्ले योर प्रेजेंटेशन। So, anyone know about the type of research article? मुझे chat box में बताइएगा ताकि मुझे आइडिया होता रहे आप लोगों की level of knowledge के बारे में। So, primary and secondary. Aisha says primary and secondary research. These are the types of research. That's great. What are the types of research articles? How do we present our research to public? हम किस तरह उसे present करते हैं? Cross sectional cohort, systematic review, meta analysis. G, yes, that's great, that's fine. So so we are going to delve into the types of research article. So one of the type that is the most common type is original article, then comes the review article, then comes the meta analysis, then case report, short communication, and one was the guest editorials. I thought that was not so important for you people, so I didn't add that. Yes, Shafiqur Rahman, review article, narrative article, meta analysis. Good. I'm pleased to know that आपको already इतना knowledge है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बड़ी बेसिक सी बनाई है ये प्रेजेंटेशन आपके लिए। आप तो ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रिसर्च आर्टिकल। हम बात करते हैं ओरिजिनल आर्टिकल की। ओरिजिनल का क्या मतलब है? ओरिजिनल, व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल? ओरिजिनल मीन्स, ओरिजिनल का मतलब है कि जी बिल्कुल, द डेटा यू हैव कलेक्टेड योरसेल्फ, जो काम आपने खुद किया है, दूसरों के काम को आपने चूज नहीं किया। यू हैव डिड इट बाय योर ओन। Directly from the source. That's great. Meta analysis. Meta means above, analysis means something that have analyzed. Okay, already published जो studies हैं उनको analyze करना. Then comes the review article. Review articles means
जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड है उनको रिव्यू करना. सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन डिटेल. तो इसमें मैंने कुछ बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं. ओरिजिनल आर्टिकल प्रेजेंट्स एंटायरली न्यू डेटा कलेक्टेड थ्रू रिसर्च एक्सपेरिमेंट और स्टडीज कंडक्टेड बाय द ऑथर्स. ठीक है, कोई भी ऑथर खुद कोई स्टडी कंडक्ट करता है और प्रेजेंट करता है एंटायरली न्यू डेटा. ठीक है, द डेटा आर ओरिजिनल एंड हैव नॉट बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड. फॉर एग्जांपल, आप में कोई आयशा है. ठीक है, आयशा का दिल चाहा कि वो एक रिसर्च कंडक्ट करे, तो आयशा ने एक टॉपिक सोचा, वो खुद अपनी स्टडी पॉपुलेशन के पास गई, उनसे क्वेश्चनेयर फिल करवाया, डेटा कलेक्ट किया और उसको एनालाइज किया, देन उसको पब्लिश किया. तो ये हो गया ओरिजिनल आर्टिकल. ठीक है, देन कम्स द मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि डू नॉट जनरेट. Should I start or wait for other participants? Tell me in Ma'am, chat box. kindly wait for a few minutes. Okay, I'm waiting. अच्छा मिनाइल, आप ही इसमें होस्ट रहे. मैं विदाउट होस्ट राइट्स में अपनी स्क्रीन शेयर कर पा रही हूँ, तो आप ही इसमें होस्ट रहे, फिर आपको आइडिया भी होगा ना कि ये मीटिंग जो है वो कब आपकी एंड हो रही है. ठीक है मैम. I think so, ma'am. You can start. I'm admitting the participants as soon as they are coming, so you can start. Okay, that's fine. So I was talking about original article, then I told you people about meta analysis. तो आपने क्या किया, ऑलरेडी पब्लिश्ड जो रिसर्च है, फॉर एग्जांपल आपका दिल चाहा कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक रिसर्च कंडक्ट करें और आप उसका मेटा एनालिसिस करें. तो आपने क्या किया कि डिफरेंट डेटा बेसिस पे आपने सर्च किया इमोशनल इंटेलिजेंस को. जैसे कल आपको ऐसा ने बताया होगा, गूगल स्कॉलर पे आप, एमबेस पे, कॉकरेन पे आप कर रहे हैं, एरिक पर कर रहे हैं, या आप साइंस डायरेक्ट पे कर रहे हैं. तो आप इन सब डेटा बेसिस पे आप सर्च करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, और उस पर जितनी स्टडीज आती हैं आप उन स्टडीज का जितना भी डेटा है उसको आप कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं. तो देन इट विल बी अ मेटा एनालिसिस. सो दे डू नॉट जनरेट न्यू डेटा देमसेल्फ, इंस्टेड दे एग्रीगेट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल ओरिजिनल रिसर्च स्टडीज ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज ऑलरेडी पब्लिश. तो मैंने यहाँ हाईलाइट किया वर्ड ऑलरेडी पब्लिश्ड. आपने ऑलरेडी पब्लिश्ड जो आर्टिकल्स हैं, जो रिसर्च हैं, आपने उन्हें कलेक्ट किया और उनको आपने एनालाइज कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड मेटा एनालिसिस. देन कम्स द रिव्यू आर्टिकल.
रिव्यू आर्टिकल में क्या किया आपने, डू नॉट प्रेजेंट न्यू डेटा और ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग, बिल्कुल इसी तरह ये जैसे मेटा एनालिसिस है, लेकिन यू स्टे वन स्टेप बिहाइंड द मेटा एनालिसिस। आपने क्या किया, आपने सिर्फ उन फाइंडिंग्स को रिव्यू कर दिया और आपने बताया कि स्टडी XYZ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ये कहती है, स्टडी ABC ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्कअप किया मेडिकल स्टूडेंट्स पे, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटिव टू अदर स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। तो इस तरह आपने सिर्फ रिव्यू किया, आपने उनके कलेक्टेड डाटा को एनालाइज नहीं किया। तो ये दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिव्यू आर्टिकल। सो आर यू क्लियर अबाउट दिस? चैट बॉक्स में मुझे बताएं। लेट्स कैन वी मूव फॉरवर्ड और शुड वी स्टे एट दिस स्लाइड एंड डिस्कस दिस? Okay, clear. Thank you so much for your active participation and your answer. You keep me stopping where you find it difficult to understand. So we are moving towards next slide. मैंने डिटेल में आपको बताया कि टाइप ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस दैट प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च कंडक्टेड बाय द ऑथर्स। ठीक है, ऑथर ने खुद एक स्टडी सेटिंग में जाके, एक जगह पे जाके एक रिसर्च कंडक्ट की है। जैसे फॉर एग्जांपल मिनाहिल RLMC में एक रिसर्च कंडक्ट करने जा रही हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ क्वालिटी ऑफ किडनी डिजीज पे, लाइफ क्वालिटी ऑफ रीनल फेलियर पेशेंट पे, और वहाँ ये डाटा कलेक्ट कर रही हैं। तो ये इनका ओरिजिनल वर्क हुआ, ये ओरिजिनल आर्टिकल हो गया इनका। ठीक है, तो ये मैंने एक सैम्पल आर्टिकल जो है वो शेयर किया है। ये टॉपिक भी आपके इंटरेस्ट का है, मेडिकल स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव ऑन एब्सेंटिज्म एंड इट्स रेमेडीज। ठीक है, ये एक आर्टिकल है जो कि पाक आर्म्ड फोर्सेस मेड जर्नल में ये पब्लिश हुआ। और टॉपिक ये था कि अब वो इसमें देखना क्या चाह रहे हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव देखना चाह रहे हैं कि एब्सेंटिज्म और उसकी रेमेडीज पे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, ये प्लीज जरा म्यूट कर दीजिएगा, आवाज आ रही है पीछे से। कैन यू सी माई कर्सर? ओके, देयर इज अ वर्ड यूजिंग सर्वे यूजिंग अ क्वेश्चनेयर। अब उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया और क्वेश्चनेयर यूज करके किया। ठीक है, और एक फोकस ग्रुप डिस्कशन भी की उन्होंने। ठीक है ना, और टोटल स्टूडेंट्स कितने उसमें थे, 300 स्टूडेंट थे, यानी उनकी पॉपुलेशन क्या थी, स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि इल डिफाइंड जो है वो एब्सेंटिज्म क्यों है, इनइफेक्टिव टीचिंग की वजह से, इल डिफाइंड करिकुलम की वजह से, नॉन कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की वजह से, ये उनका इनका कंक्लूजन था। तो बेसिकली डॉक्टर मोईद इकबाल एंड डॉक्टर आमना दे वेंट टू द शेख जायद मेडिकल कॉलेज and they get that data by using a questionnaire, and they got that data from 300 students। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्टडी पॉपुलेशन ओरिजिनल आर्टिकल में आपके स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये उनका ओरिजिनल आर्टिकल हो गया। ठीक है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द केस रिपोर्ट। कल बात की डॉक्टर एसएन ने, उन्हें केस रिपोर्ट पब्लिश करना बड़ा अच्छा लगता है। इट्स वेरी इजी टू पब्लिश केस रिपोर्ट एज कम्पेयर टू अदर स्टडीज। तो केस रिपोर्ट क्या होती है, कोई भी अनयूजुअल चीज, कोई सिम्टम्स, कोई डिजीज, कोई अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आपने देख लिया, कोई यूनिक मेडिकल सिचुएशन आपने देख ली, देन यू जस्ट रिपोर्ट दैट डिजीज। जैसे उन्होंने कल बताया कि आपने जो कोविड था, कोविड भी पहले आपकी केस रिपोर्ट थी, जब वो अनयूजुअल चीज फर्स्ट टाइम उन्होंने देखी। देन देयर इज अ सीरीज ऑफ केसेस, यू नो। तो केस रिपोर्ट क्या हुई, अ केस रिपोर्ट इज अ डिटेल्ड account of a single or small number of individuals who have medical condition, unusual symptoms, and unexpected to treatment or unique medical situation. Kindly mute this noise, please. Okay. Should we move towards next slide, or do you have question regarding this case report? Say yes if you have question. Say no if you don't have question. Okay, fine. So moving towards the next slide.
ये मैंने एक केस रिपोर्ट आपको शो की है. आई हाईलाइटेड द वर्ड ट्रोक्लिया. केस रिपोर्ट फ्रैक्चर ऑफ द ट्रोक्लिया. आई थिंक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपर लिम्ब तो उन्होंने पढ़ ही लिया होगा. यू मे हैव हर्ड अबाउट द अपर आर्म फ्रैक्चर, लोअर आर्म फ्रैक्चर, और द फ्रैक्चर ऑफ टिबिया एंड फिबुला, समथिंग एल्स, बट यू डोंट डिडंट हियर अबाउट ट्रोक्लिया. ट्रोक्लिया का फ्रैक्चर जो है ना बड़ा रेयर है. मैंने तो खुद ये फर्स्ट टाइम पढ़ा. तो देयर वाज अ केस रिपोर्ट in India where they found a trochlea fracture. तो ये एक अनयूजुअल मेडिकल कंडीशन थी, तो उन्होंने उसे रिपोर्ट किया. ठीक है, तो आपकी जो अनयूजुअल मेडिकल कंडीशन हो उसे आप जब रिपोर्ट करें, उसे पब्लिश करें, दैट टाइप ऑफ रिसर्च आर्टिकल इज केस रिपोर्ट. डू यू गेट इट? कैन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड और we should stay on this? Do you have any question regarding this slide? Okay, fine. Zainab says no. So नेक्स्ट इज रिव्यू आर्टिकल. अब रिव्यू आर्टिकल की मैंने बात की कि दे आर जस्ट समरीज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च की समरीज होती हैं. रिव्यू आर्टिकल्स आर अ टाइप ऑफ एकेडमिक पेपर दैट समराइज एंड evaluate the existing research on a particular topic that has been already published. पहले जो आर्टिकल और रिसर्च पब्लिश हुई है उन्हीं की जो समरी है उसे हम रिव्यू आर्टिकल कहेंगे. ठीक है, सो आई एम शेयरिंग अ रिव्यू आर्टिकल विद यू पीपल. ये आर्टिकल है that the intent of the article is to review a review of relationship between personality एंड परफॉर्मेंस इन स्मॉल ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, उन्होंने कोई स्टडी ये कंडक्ट की जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी और उनकी परफॉर्मेंस को का रिलेशनशिप देखें जब उन स्मॉल ग्रुप डिस्कशन या स्मॉल ग्रुप स्टडी करवाते हैं. तो इसमें मैंने दो वर्ड्स हाईलाइट किए नीचे. Studies included cover the period from 1900 to October 1957. ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे वो लोग हैं जो इन स्टडीज में इंक्लूडेड हैं. एक्चुअली सेइंग आपकी स्टडीज इसमें पॉपुलेशन है, इसमें पीपल आपके पॉपुलेशन नहीं है. तो यहाँ वर्ड स्टडीज का वर्ड मैंने यूज किया है, स्टडीज को हाईलाइट किया कि आपके रिव्यू आर्टिकल में स्टडीज आपकी पॉपुलेशन होती हैं. आपकी जो आम लोग हैं, आपके जो पेशेंट्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन नहीं, स्टडीज पॉपुलेशन है, जिसमें उन्होंने ड्यूरेशन दिया हुआ है कि हमने ये 57 ईयर्स में जो है ना ये स्टडीज हमने कलेक्ट की हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस, मेटा इज अबव एंड एनालिसिस एनालिसिस. तो जो ऑलरेडी एनालिसिस हुआ हुआ है उसके बाद उन सारी रिसर्च को, रेलेवेंट रिसर्च को कंबाइन करना और उनको दैट इज मेटा. Meta analysis are a type of research study that combine the results of multiple studies on the same topic searched through different databases. Are you clear about this? Should we move forward or stay on this slide? Please respond. Okay, you are clear about this slide. सो मेटा एनालिसिस की मैंने एक एग्जांपल दे दी कि हम एक मैंने आर्टिकल मुझे मिला, रिसर्च आर्टिकल, द इम्पैक्ट ऑफ पीयर प्रेशर ऑन सिगरेट स्मोकिंग among high school and university students in Ethiopia, a systematic review and meta analysis. ठीक है, तो ये क्या है कि उन्होंने इस रिव्यू में देखा, एक मेटा एनालिसिस में देखा कि पीयर प्रेशर का क्या इम्पैक्ट है सिगरेट स्मोकिंग पे. बेसिकली ये अक्सर ऐसा होता है ना कि मैनी टाइम्स बॉयज खास तौर पे पीयर प्रेशर में सिगरेट स्मोकिंग करते हैं. तो उन्होंने ये इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मेटा एनालिसिस किया. ठीक है, तो इस मेटा एनालिसिस में मैंने ये देखे, आप इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं कि ये उन्होंने डाटा कैसे कलेक्ट किया. ये डाटा आप किसी स्टडी सेटिंग में जाके नहीं किया, उन्होंने एन एक्सटेंसिव सर्च ऑफ की डेटाबेसेस इंक्लूडिंग कॉकरेन लाइब्रेरी, पबमेड, गूगल स्कॉलर, हिनरी, एम्बेस, साइंस डायरेक्ट वाज कंडक्टेड. यानी कि ये उन्होंने डाटा सेटिंग में जाके कलेक्ट नहीं किया बल्कि डेटा बेसिस से कलेक्ट किया, ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स को देख के किया. और इसका जो ड्यूरेशन था दैट वाज 21 सितंबर टू दिसंबर 25. ठीक है, 2018.
तो ये उन्होंने ड्यूरेशन भी बता दिया। अब रिजल्ट्स में देखें वो पॉपुलेशन का जिक्र नहीं करे रिजल्ट में, वो ऑल्दो ये स्टडी स्टूडेंट्स पे हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 175 सर्च्ड आर्टिकल की बात की, यानी उनकी पॉपुलेशन में उन्होंने 175 आर्टिकल्स को रखा, जिनमें से 19 उनके क्राइटेरिया पे फुलफिल हुए और उन 19 पे उन्होंने मेटा एनालिसिस किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ओरिजिनल आर्टिकल में, मेटा एनालिसिस में, सिस्टमैटिक रिव्यू में, आपकी जो ओरिजिनल आर्टिकल में पॉपुलेशन जो आपके लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, कोई रजिस्ट्रीज होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, लेकिन जो आपके मेटा एनालिसिस और रिव्यू है उनमें आपकी पॉपुलेशन, आपकी स्टडीज होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये सारी ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस करते क्यों हैं? ठीक है, काइंडली रेज योर हैंड एंड प्लीज आंसर मी। हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का हमें मकसद क्या है, फायदा क्या है? कैन समवन रिप्लाई? Because we want to know that at a certain point of time, what is the prevalence or might be the frequency or factors of some disease. Any So other? yes. I think I should nominate myself. अब्दुल्ला आबिद, आप बताएं क्या मकसद है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करने का? हम एक्सपेरिमेंटल क्यों नहीं कर लेते? ऑब्जर्वेशनल क्यों करना चाह रहे हैं हम? अब्दुल्ला आबिद, कैन यू हेयर मी प्लीज? ओके, Mushaim says enable researcher to see their subject, make choices and react to situation in their natural setting. Okay, fine, that's great. Not to kill humans. Okay, we can't kill human in every experimental study. Sorry, network issue. Okay, fine. So आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। तो हमारा मकसद क्या है? एक तो ये कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो हम सिर्फ एक ड्रग पे करेंगे, ठीक है, और उस ड्रग पे ही हम उसी के पोटेंशियल जो है वो बेनिफिट्स और हार्म्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वो हम एक फॉर द टाइम बीइंग, फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे हम उसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस ड्रग को, हमें उस टाइम पे उसका इफेक्ट पता चलेगा। पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग सम कमेंट्स अबाउट लेजिक। लेजिक के बारे में आपको आइडिया होगा कि सर्जरी है आई लेंस की, आप जो है वो ग्लासेस से छुटकारा पाने के लिए लेजिक करवाते हैं। तो उसमें पेशेंट लोगों के कमेंट्स में देख रही थी कि आई ड्राइनेस और इस तरह की चीजें उन्हें काफी साइड इफेक्ट्स उसमें फेस करना पड़ रहे हैं। तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं फॉर एग्जांपल लेजिक पे, तो हमने उस वक्त लेजिक कर लिया और हम पेशेंट को हमने घर भेजा, उस वक्त उसको ठीक नजर आ रहा है, लेकिन बाय द टाइम आफ्टर मैनी डेज जो है वो पेशेंट जो है ना, वो उसे डिफरेंट साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन वो फेस करना पड़ी। उसे उसे ग्लेयर्स वो देख रहा है, उसको स्ट्रॉबिंग लाइट उसकी आंखों में जा रही है। तो हम उस इफेक्ट को कैसे देख सकेंगे? एक्सपेरिमेंटल में हमने लेजिक को का एक्सपेरिमेंट तो कर लिया करके कुछ पेशेंट में, लेकिन उन साइड इफेक्ट को जो लॉन्ग टर्म में उनको हम देखना चाह रहे हैं वो हमें ऑब्जर्वेशनल रिसर्च से पता चलेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आल्सो हैव अ रोल इन रिसर्च इनटू द बेनिफिट्स एंड हार्म्स ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है, आप एक मोमेंटेरली या कुछ टाइम का तो इम्पैक्ट देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल में, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए हमें ऑब्जर्वेशनल की जरूरत पड़ती है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स कैन डिस्कस द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ अ ड्रग, बट केस ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कैन डिस्कस लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज अचीव्ड फॉर डेली लाइफ मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, सो नाउ देयर इज एन एक्टिविटी टाइम। मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, और आप लोग जो है ना ग्रुप्स में अल्फाबेटिकली खुद ही अपने आप को चेंज कर लें। और आपने जो डॉक्यूमेंट में शेयर करने जा रही हूँ, बेसिकली उसमें दो रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में एक टेबल बनाया गया, कंपैरेटिव टेबल। ठीक है, और उसमें आपने वर्ड्स को आपस में मैच करना है, ठीक है ना, करेक्ट वर्ड्स को करेक्ट हेडिंग के सामने लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं डिस्प्ले भी कर देती हूँ। आपको अभी मेरी स्क्रीन पे मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है या कुछ और नजर आ रहा है अभी? प्रेजेंटेशन शो हो रही है मैम।
प्रेजेंटेशन शो हो रही है, तो फिर मैं न्यू शेयर करूं? आई थिंक न्यू शेयर करूंगी तो फिर पता चलेगा, है ना? न्यू शेयर करती हूँ मैं। You can close this up. दोबारा शेयर कर लो। जी मैं न्यू शेयर करती हूँ। हाँ जी, ये है, न्यू शेयर करती हूँ। सो कैन यू पीपल सी दिस स्लाइड, दिस टेबल? आपको ये टेबल नजर आ रहा है? ओके, सो दिस इज अ टेबल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ मेटा एनालिसिस एंड ओरिजिनल आर्टिकल। ठीक है, इसमें एथिकल कॉन्सेंट, स्टडी सेटिंग, स्टडी पॉपुलेशन, मेथड ऑफ सर्च एंड डेटा सोर्सेज, ये 4-5 एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई मेटा एनालिसिस एंड ओरिजिनल आर्टिकल के बारे में। यू हैव अ टाइम ऑफ 7 मिनट्स। आपने 7 मिनट्स में अपने आपको ग्रुप कर लें आप, और अल्फाबेटिकली, ठीक है? और देन यू विल चूज अ ग्रुप लीडर फ्रॉम योर ग्रुप्स एंड यू विल प्रेजेंट द रियल ओरिजिनल वाला जो आपका जो आप सोचते हैं कि कौन सी जो लाइन है वो मेटा एनालिसिस के अंडर आती है, कौन सी ओरिजिनल आर्टिकल के अंडर आती है। ये रैंडमली लिखे हुए ये वर्ड्स, यू हैव टू रीसेट देम ऑल। समझ आ गई आपको? आर यू क्लियर अबाउट द एक्टिविटी टास्क? जस्ट say yes if you are clear and no if you are not clear. Okay, so okay, kindly repeat. ये एक कंपैरेटिव टेबल है ऑफ मेटा एनालिसिस एंड ओरिजिनल आर्टिकल। ठीक है, इफ यू सी माय कर्सर, फॉर एग्जांपल देयर इज अ वर्ड रिटन एथिकल कंसेंट और उसके सामने लिखा हुआ है रिक्वायर्ड मेटा एनालिसिस में, और ओरिजिनल आर्टिकल में लिखा है नो नीड। ठीक है, स्टडी सेटिंग इसमें लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, एंड ओरिजिनल आर्टिकल के आगे लिखा हुआ वेरिड पॉपुलेशन स्टडीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वेरिड पॉपुलेशन वाला वर्ड स्टडी पॉपुलेशन के सामने लिखा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है उसको स्टडी सेटिंग के सामने लिखा होना चाहिए। सो यू पीपल विल बी राइटिंग द दीज लाइंस इन करेक्ट प्लेस। ठीक है, जो चीज मेटा एनालिसिस में आनी है वो आपने उस एस्पेक्ट में लिखनी है, जो ओरिजिनल आर्टिकल में आनी है वो आपने उस एस्पेक्ट में लिखनी है। देन यू पीपल विल बी शेयरिंग आफ्टर डूइंग दिस टास्क। आपके पास अगर लैपटॉप है या फोन है, जिसके पास भी है, आप इसको रीराइट करके इस टेबल को ठीक करेंगे एंड देन यू विल प्रेजेंट योर रीफ्रेज्ड और री रिटन टेबल टू अस एंड वी विल एनालाइज कि आपने किस हद तक समझा इन चीजों को, आपको क्या समझ आई और क्या नहीं आई। ठीक है, सो इज इट क्लियर अबाउट दिस और नॉट? Should I repeat or not? I think so, ma'am. Okay, It's fine. clear. Okay, fine. So, your time starts now. It's 8 p.m. and then you will be back till 8:10. Okay, fine. Is it fine? 8 minutes are enough or not? Yes, ma'am. We'll just make the groups quickly and we'll be back in 5 to 10 minutes. Okay, okay, that's great. I will be waiting here. एक्सक्यूज मी मैम, काइंडली आप वो स्लाइड शेयर कर सकती हैं ताकि उसका स्क्रीनशॉट ले लें। I couldn't get it. What you are saying? Slide share कर दूं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड और वर्ड स्लाइड? मैम ये जो I have shared कंपैरिजन it. वाली, I think I have shared it on WhatsApp group. Can you see the WhatsApp group or not? मैम आई एम नॉट एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। Okay, fine. I will share my slide and
So do you see?
Ma'am, I'll reshare the Zoom link again.